ओम शांति। ये 29 दिसंबर 2021 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। आज बाबा का टॉपिक है परमात्म मिलन मेला। बाबा समझाया करता है कि ये है संगम युग। संगम का मतलब होता है मिलन मेला। जब नदियाँ मिलती हैं अथवा नदी सागर से मिलती हैं, उसको संगम कहा कहते हैं। तो बाबा समझाया करता है कि आप सब आत्माएं नदी हो। कल बाबा ने सीढ़ी के ऊपर समझाया था ना, तो ये आपका 84 जन्म का पाठ का चित्र है। आपका 84 जन्म वो जैसे कि एक नदी बहती है और हर नदी का अपना अपना रास्ता होता है। तो भल सभी ब्राह्मण 84 जन्म लेते हैं, परंतु हर ब्राह्मण का अपना अपना पाठ है। हर नदी का अपना अपना रास्ता है। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। तो हम सब ने निराकार स्वरूप में परम धाम को छोड़ करके इस सृष्टि चक्र में अवतरित होकर के अपना पुनर्जन्म का पाठ बजाया है। और हर नदी अंत में कहाँ पहुँचती है? सागर के पास। ठीक है ना। चालू होती है ऊंची स्थान से, पहाड़ी से नदी चालू होती है, पहुंचती है सागर, सागर में समा जाती है। तो बाबा आज समझा रहा है कि ये है सृष्टि चक्र का जैसे रास्ता कहो, नियम कहो। आपको चालू होना होता है ऊंचे स्थान से, परम धाम से। फिर अपना पाठ ड्रामा अनुसार बजाना होता है, अर्थात आप नदिया को बहना होता है। अभी अंत में किससे मिलना होता है? सागर से, ज्ञान सागर शिव बाबा से। तो वर्तमान समय बाप इस ड्रामा में आ गया है। बाबा वर्तमान समय त्रिलोकीनाथ है। बाकी सारे कल्प में केवल परम धाम निवासी हैं, लेकिन अभी संगम युग पर त्रिलोकीनाथ है। तो चाहे साकार मिलन, चाहे योग द्वारा सूक्ष्म वतन का मिलन, परम धाम का मिलन, यह सब इसी समय होता है। और बाप किससे मिलता है? जिन्होंने पहले पहले परम धाम छोड़ा है। तो ये भी एक ड्रामा का नियम है कि शिव बाबा सर्व से नहीं मिलता है, लेकिन जो अलग रहे हैं सबसे जास्ती समय उनसे मिलता है, उनको पढ़ाता है। हम सब आत्माओं ने बहुत कम समय परम धाम में अपना पाठ कहो अथवा समय कहो, वास्तव में परम धाम दोनों से ऊपर है, परंतु बहुत कम समय हम परम धाम में रहते हैं। सबसे बड़ा पाठधारी श्री कृष्ण की आत्मा का पाठ है। तो ब्रह्मा बाबा बहुत कम समय बस परम धाम को टच करेंगे, तुरंत ही श्री कृष्ण के स्वरूप में अवतरित होगा। इसलिए बाबा कहा कहता है श्री कृष्ण की आत्मा का पूरे 84 जन्म का पाठ है। यदि हम
ब्राह्मण अभी संगम युग पर कम योग लगाएंगे अथवा हमारी पवित्रता में कुछ फर्क रह गया तो हो सकता है कि 82 ऐसे जन्म कुछ 2-4 जन्म कम भी हो सकता है, तो फिर जास्ती समय परम धाम में बैठेंगे ना, और फिर थोड़े समय के बाद आएंगे। परंतु मेजॉरिटी जो ब्रह्मचर्य, शुद्ध आहार और रोज़ मुरली सुनते हैं, ये निशानी है 84 जन्म लेने वाले की। तो कुछ मिनट का फ़र्क होगा, कुछ घंटे का, बहुत जास्ती समय परम धाम में आप नहीं बैठेंगे। तो इसलिए अब भी आपको समय मिल रहा है शिव बाबा के साथ, आप अब भी फ़ायदा ले सकते हो। तो बाबा कह रहा है कि जैसे आजकल ज़माना बदल गया है, सब कुछ दिखाते हैं, परंतु पहले ज़माने में जब शादी होती थी तो डाउरी दिखाते नहीं थे, जो बहुओं को देते थे वो गुप्त देते थे। वो ये बड़े फैमिलीज़ में दिखाने की आवश्यकता नहीं। मैं समझता आजकल तो सब कुछ दिखाते हैं। तो बाबा कह रहा है कि देखो सारी दुनिया को मालूम ही नहीं है कि कितनी प्राप्ति आप सबको मिल रही है। दुनिया को मालूम नहीं है कि हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट पोजीशन वाले बाप दादा इस समय उपस्थित हैं, मालूम नहीं है। तो ये अभी बाबा दे रहा है, और बाबा का स्थापन किया हुआ दुनिया वो सारी पवित्रता की दुनिया है। तो इससे बाबा पवित्रता की स्थापन कर रहा है हमारे अंदर, और फिर वो दुनिया के अंदर फैलेंगी। तो पतित पावन बाप ज्ञान का सागर है। तो इस राजधानी वापस आ जाती है पवित्रता के और योग के बल से। वो बाबा कह रहा है रावण से आपकी राजधानी चली जाती है। तो ये है आपका पाठ, और अभी मिलन मेले का समय। और आज का वरदान में बाबा हम सब का चेकिंग करा रहा है कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे दिल में ये बैलेंस है रुहाब और रहम का। रुहाब माना स्वमान, रूहानी स्वमान को रुहाब कहते हैं, नशा। तो एक तरफ हमें अपना रूहानी नशा रखना है, अर्थात स्वयं के प्रति सोचना है। दूसरी तरफ हमारे में दया भाव भी होनी चाहिए, रहम आनी चाहिए। तो इसमें एक स्थूल बात और एक सूक्ष्म बात होता है। स्थूल बात माना किसी को प्रैक्टिकल में मदद करना, सहयोग देना। वो सूक्ष्म जो कल का वरदान था ना कि रजिस्टर को साफ करना, कि यदि किसी से भूल हुआ और आपने दिल में नहीं रखा तो उसको रहम कहते हैं। तो क्यों भगत देवी देवता के मूर्ति के आगे जाते हैं? क्योंकि उनमें निश्चय है कि वो भगवान के रूप जो मानते हैं अपने दिल पर नहीं रखेंगे भूल। तो इसलिए सब भगत अपना भगवान, अपने इष्ट को दिल की बात सुनाएंगे। मनुष्य को सुनाएंगे तो वो दिल पर रखेंगे, इसलिए उनसे छिपाएंगे, परंतु अपने भगवान से नहीं छिपाएंगे, क्योंकि निश्चय है कि उनमें रहम है। ठीक है ना? तो इसलिए दिल पर नहीं रखते। तो इष्ट कौन है? आप सभी हो। तो इसलिए बाबा कह रहा है आपको अभी ये प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करना है। ये आपके दिल पर आप कुछ रखते नहीं हो, किसी के बात को रखते ही नहीं हो,
तो जितने ये अंदर रजिस्टर को आप साफ करेंगे साइलेंस पावर द्वारा, तो फिर लोगों को विश्वास लगेगा कि आप उनको जज नहीं कर रहे हो और आपकी दृष्टि वृत्ति उनके प्रति बदलेंगी नहीं. Om Shanti. Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 29th of December 2021. Today, Baba's topic is the meeting with the Supreme Soul. The word that Baba uses for this age is confluence, and I'm sure you're all aware that confluence refers to, it's a geographical term, which refers to when rivers meet each other or when a river meets an ocean. So Baba explains to us that all of you souls are rivers. Rivers start from a high point, usually a mountain, and they flow, and each river will have its own course. So Baba was explaining to us yesterday on the picture of the staircase. And so we're all part of this big drama of all these four big ages. But each of us has our own course within that. Within this big drama, every soul flows in their own direction, in their own way. We go through the same stages as Brahman souls, but we're all very different because our course has been different. And so the picture of the staircase shows us that. And we start off at the top in the soul world, and then we incarnate into this drama, and then we flow. Now, where does a river have to reach? If it starts in a high position, where does it reach? Rivers inevitably flow into the ocean. And so Baba says this is now the confluence age. And the ocean of knowledge has incarnated into the drama. At this time, he is the Lord of the three worlds, so he comes and goes. And you rivers have now flowed into the ocean. Now, Baba explains that one of the laws of the drama is that he doesn't meet everyone, but he meets those that left the soul world a long time ago, right at the start of the golden age. Souls who spend longer with Shiv Baba in the soul world, he meets them there in a sense. But for the Brahmin souls, we spend very little time in the soul world, so he gives us time now down here. The soul that has the longest part in this drama is the soul of Sri Krishna, the soul of Brahma Baba. And so when Shiv Baba takes us all back, Brahma Baba will just touch the soul world and then incarnate instantly as Sri Krishna. He spends the least time in the soul world. And so the souls who are taking 84 births, and the sign of that is celibacy, pure food, and daily Murli. So the souls who are doing that, they will take the 84 births. And such souls will spend a few minutes, maybe a few hours in the soul world. They won't be spending long. And this is why now you're having the opportunity to meet Baba either through a physical body or as you develop your yoga, the subtle meeting, the subtle region in the soul world. And we're gaining all this chance of sustenance
the divine birth, the divine sustenance we're gaining. Today Baba is saying to us that back in the day, they never used to show the dowry that they gave to daughter-in-laws. I think nowadays the tradition has changed, and I had attended a wedding a couple of years ago, and they actually lay out in a room everything they're giving their daughter-in-law. They tend to show it nowadays. But Brahma Baba is saying that back in the day they never used to show it. And so Baba as well is giving each Brahmin so much, and he's creating a future cycle. But yet no one knows in the world. Bab-Dada as well, they're the highest authorities, the highest positions, and yet they don't have any external show. It's all very simple. And so Baba does everything in a very incognito way. But we rivers have now flowed back to the ocean. So the journey through the cycle was always leading here. It was always leading back to the ocean. And so Baba in this way gives us that awareness. And what is the ocean about? Well, he's the ocean of knowledge, and he's the purifier. So Baba is saying that he has come to establish a kingdom which is based on purity. And that purity is being instilled within us now, and it will last for half a cycle. For some Brahmins, they might struggle with that. So Baba is saying then they might not have enough yoga, they might not have enough purity developed. So maybe they might stay a bit longer in the soul world. They might take 82, 80 births. And this is how it works. So we're gaining that opportunity now. And then for half a cycle, that purity lasts and the attainments last. And then from the Copper Age, we begin to use the vices. And as we use the vices, we lose our kingdom. And so then we go through a more troublesome part of our journey. So Baba explains to us that this is your journey now. And in today's blessing, Baba is asking us to check whether we've got the balance between our self-respect and compassion. The word that Baba is using for self-respect is ruhab. Ruhab. R-O-O-H-A-A-B. Ruhab. And ruhab means your spiritual self-respect or spiritual intoxication. And Baba is developing that in all of us. But sometimes by doing that, we can become too self-absorbed or too egocentric, too fixed in our perceptions. And so Baba is saying that have you also got a balance with your compassion, which is Rehem. Rehem. Rehem is mercy or compassion. That's R-U-H-E-M, Rehem. And Baba is pointing out to different idols that people worship. And devotees have this faith that their God that they worship will not hold anything in their heart. If they share mistakes with their God, if they confess, they trust in that deity's forgiveness. And so Baba is saying, well, whose memorials are these? These are your memorials. So do you have those two qualities now? You have to have your own ruhab, your own spiritual self-esteem. But then you also have to have that empathy and compassion for others. Yesterday's blessing,
was on cleaning our register through the power of silence. And that's connected with this concept of rehm, of compassion. If we are holding anything in our heart towards anyone, it will be in our attitude and vision. And so that soul will feel judgment. And they'll see it in our eyes, they'll feel it in our attitude. And Baba's saying, then you haven't cleaned your register. You've registered it, you've kept it. And that other soul can sense that. So you have to become very, very clean on the inside, and that's subtle compassion. Practical compassion is when we help someone, practically. But this subtle compassion is also something we have to work on. Om Shanti.